सांप वाला। हाँ, इसको होल्ड रख, इसको रख जरा 2 मिनट। जॉन ऐसा पोस्ट हो नहीं। थैंक यू सर, दोबारा आना, लेके आना था। Okay, 5 minutes only. Start करो, 5 minutes only. ऐसी कोई 3 चीजें आपकी लाइफ में जो आप अनलॉक करना चाहते हैं? जी, जैसे कैंपेन में बताया गया है, आई वुड लाइक टू अनलॉक द ट्रुथ, आई वुड लाइक टू अनलॉक फियर एंड आई वुड लाइक टू अनलॉक बाउंड्रीज। मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं डरना नहीं चाहता, एंड आई वुड लाइक टू नो द ट्रुथ अबाउट एवरीथिंग। हर चीज़ की सच्चाई, आई रियली लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। जो नेशनल जियोग्राफिक शो, जैसे कि कहा आपका फेवरेट चैनल है, एक शो का आप अगर हिस्सा बनना का अगर मौका मिले तो which शो होता है? Yeah, I'd like to, in fact, should I look in front and say that? Yeah, Okay. settle. Well, I'd like to be a part of many shows. काफ़ी shows है जो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन एक शो जो मुझे पसंद है वो ये डेंजरस एनकाउंटर्स है, और डेंजरस एनकाउंटर्स का मैं भाग बनना चाहता हूँ, हिस्सा बनना चाहता हूँ। एंड I'd like to go out into the jungles, और जो हमारे एनिमल्स है जिसे हम डेंजरस कहते हैं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। आई थिंक दैट्स माई ड्रीम इन लाइफ। जॉन, आपके लिए अनलॉक बाउंड्रीज क्या है? जी, अनलॉक बाउंड्रीज जैसे हमने दिखाया है कैंपेन में, मेरा एक फोटोग्राफ एक यूनक के साथ, फॉर एग्जांपल, कि हम जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, जिनके हमारे माइंड में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आई थिंक आईड लाइक टू रियली गेट आउट ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस। हमारी जो ऑडियंस है, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि यू नो वी हैव फिक्स्ड व्यूज़, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर फिक्स्ड व्यूज़ है, या गे मैरिजेस के ऊपर फिक्स्ड व्यूज़ है, या यू नो I'd like people to think outside the box and say that, listen, we must be accepting to different cultures, different emotions, different people. तो ये boundary unlock करना चाहता हूँ। I'm finding it very audio here and I'm talking. जब भी आप किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं या फिर किसी चैनल को, क्या क्राइटेरिया रहता है आपका? जी, सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही रहता है कि एक ब्रांड फिट होना चाहिए। हमारी जो फिलॉसफी है वो मिलनी जुलनी चाहिए, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू एंडोर्स ब्रांड्स दैट आई डोंट बिलीव इन। जितने सारे मैं ब्रांड्स एंडोर्स कर रहा हूँ, इनकी जो फिलॉसफी है, आई लिव बाय दैट फिलॉसफी। और आपने मेरे एंडोर्समेंट्स देखे होंगे, आई थिंक फॉर्चुनेटली काफ़ी क्रेडिबल है और काफ़ी इनक्रेडिबल भी है। मैं बहुत खुश हूँ और खुश नसीब हूँ कि हम एंडोर्सिंग द राइट ब्रांड्स। तो ब्रांड फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीपल शुडंट सी जॉन अब्राहम इन अ ब्रांड एंड से यार ये कुछ मैच नहीं हो रहा है ये सही, you know. I think that's very important. John, you think same thing happens with the films that you do? I mean, the character that you play on screen, people have certain kind of expectations Right. from John. So you think that happens with films as well? Yeah, films as well. I think it's important to do all kinds of films, but it's important to do films that entertain. I like a certain genre of films, that's why I produce them, and films like Vicky Donor and Madras Cafe. But I like to do, people like to see me in films that are fun, like Dhoom, Dostana, and now Welcome and Dostana 2. So it's important to do all kinds of films, but my favorite genre is always going to be action, and a lot of action, and I'm working with Nishikant again, so I'm very, very excited. And now John geography में कितने marks मिलते थे? John geography में कितने marks Sorry. मिलते थे? Yeah, I think films on wildlife haven't been really attempted, and I think it's interesting that you're asking this question. We would like to do a film on wildlife, but do it in a credible way, and I don't think we've managed to do it in a credible way. I haven't figured out a script myself. I've just about figured out a script on motorcycling, and I'm working on a script on motorcycling. It may take me a year to develop, but I want the most
intense, serious motorcycling film that India has ever seen. Not caricaturish. I'm talking about serious. Forget kindergarten and cartoons. I'm talking about serious motorcycling film, and for all motorcycling fans and people who are interested in that, but commercial film. And I'm working on it. So similarly like that, I'd like to see a film on wildlife too. Hopefully, maybe I can develop it, or some responsible producer can develop something that's very interesting. John, do you have any such, like when you're college kids, you really want to go trekking and things like that with your friends and experience, do a lot of backpacking. Have you done that when you're in college? I think that's why I'm endorsing a National Geographic, because I live my life like that. I live my life out of a knapsack, and I love trekking. I love mountain climbing. I love outdoors. So that's my space. When you like motorcycle, you can understand, right? I don't like being comfortable, because when you're comfortable, then you're safe. So I just like being outdoors. John, you didn't answer my question. John, How are you? How are you? Fine, thank you. How good were you in geography, and how much marks you used to get? I was very good in all my subjects. I was very good in geography. That's why I'm very good at National Geographic also. But yeah, I was very good in geography. Because I'm politically aware, and I'm aware about countries and everything. So I like being aware about which country is where, and everything. It's very, very interesting. जॉन बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सितारे हैं जो कि छोटे पर्दे पे अब नजर आ रहे हैं. अगर जॉन इब्राहिम को मौका मिले तो कौन सा ऐसा एक शो होगा जो जी मैं नहीं होस्ट करूंगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन द स्मॉल स्क्रीन एज ऑफ येट. मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है टू गो देयर. आई एम फिट फॉर द लार्ज स्क्रीन एंड आई विल स्टे देयर. Okay, John, last two questions. Thank you. John, about your character, welcome back. Also, have you shortlisted any titles for Hamara Bazaar, like you said about the court order and all that? No, that was always a working title. I don't know why people get excited, but that was always a working title. We had never registered it. But fine. Like I said, I'm tired of litigation, so it's over and out. I don't want to talk about it. Welcome back. Welcome Back is a completely different character. I think the best case in point is like Amir in Rangila. I think, to give you an idea. So it's a lot of fun, but it's still very different.